Hello, my dear friends. I hope you all are doing good. And this is the another part of your bank headquarters and taglines. So, in the last part, we have discussed about your private and your public sector banks. Also, we started with Reserve Bank of India, that is Bankers Bank. Now, we will be taking up some of the facts about RBI and moving on to the schemes or the products that have been run by your different banks and what have they been aimed for. So just starting with your establishment of Reserve Bank of India. So we are having the establishment date, that is 1st April 1935, and it was nationalized in 1949. Okay, the first headquarters were there in Kolkata, but it was in 1937 when RBI was moved to Mumbai. Matlab its headquarters were moved to Mumbai, and the first Reserve Bank of India's governor, Reserve Bank of India governor was your Sir Osborne Smith. Also, I would like to mention that this is before आपका जब आपका जो देश है वो आज़ाद हुआ था, that is आपका जो, क्योंकि फॉर्मेशन तो 1935 में हो गई थी, तो इसी चक्कर में जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे, ही वाज नॉट एन इंडियन, ही वाज अ ब्रिटिशर, बिकॉज इट वाज डन बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. सो वी विल बी टेकिंग अप our first Indian RBI governor. He was C.D. Deshmukh, and the commission that recommended the formation of Reserve Bank of India was Hilton Young Commission or the Royal Commission. So Royal Commission, wherever you find the word royal, it is related to your British. Okay. Next is the central bank is obviously RBI. The bankers bank is also RBI, and the present governor is your Shaktikant Das. Okay, Shaktikant Das. Now here are some more facts. So you should be knowing that your first woman to become deputy governor of RBI was KJ Udeshi, and she was appointed in 2003. Also, it was established by Hilton Young Commission, we have studied earlier, and Manmohan Singh was the only prime minister who has actually served as your governor of RBI, and he was there till 1982 to 1985. And then RBI runs a monetary museum. Monetary is in terms of money. Okay, in the premises of Mumbai head office. Mumbai head office में वो monetary museum जो है वो run करते हैं. And your देखिए RBI is responsible for printing the currency notes, whereas आपकी जो minting होती है coins की, minting of coins is done by your government of India. I would also like to suggest I would like to mention here कि आपके coins की minting के साथ साथ 1 rupees के जो notes होते हैं, they are also printed by your government of India, and you have to remember this, that all other currency notes are printed by RBI, whereas the minting and printing of 1 rupee note, so it is done by government of India. And also the currency note has 15 different languages printed on it. So now we will be talking about the product, and it was launched by whom and what did it aim for. Okay, so here that is first is Krishi Sakha app. So it is basically for your farmers friend. Sakha is friend, Krishi is basically इट इज़ फार्मर. तो अब आप देखिए लाइक जो इन्होंने किन्होंने लॉन्च किया था, इसे लॉन्च करने के लिए हमारे भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस इन्होंने लॉन्च किया था इस ऐप को. इसका एम था कि फार्मर्स को बेस्ट फार्मिंग टेक्निक्स बता के, ताकि फार्म्स में वो अडॉप्ट करके और बढ़िया ईल्ड्स से, मतलब बढ़िया ईल्ड्स उनके उसकी फसल जो है वो हो सके. फेड फर्स्ट जो है प्रोडक्ट चलाया जाता है फेडरल बैंक के द्वारा, एंड ये सेविंग अकाउंट है बेसिकली चिल्ड्रंस का, ताकि वो मनी मैनेजमेंट प्रोसेस और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी को सीख सकें. और क्रेडिट कार्ड जो है दैट इज़ लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक, एंड इट इज़ जस्ट टू गिव द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, क्योंकि इसने पार्टनरशिप कर रखी है आपके डिकैथलॉन, पॉशबीन, प्रैक्टो, फ्रेटर्निटी, इंडस हेल्थ प्लस 1mg. ओके, तो ये जो ब्रांड्स हैं इनके साथ इन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप कर रखी है, सो दैट दे कुड गिव एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स. देखिए जो मैं बताती हूँ, अगर आप लोगों को हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो. आई वुड बी ट्राइंग टू मेक अप द वीडियोज़ इन हिंदी, बट इफ़ यू फील लाइक दैट इट इज़ मच बेटर वाइल स्टडिंग इन इंग्लिश, so I will be comfortable in both. So it will just take
few seconds to type in the comment section, okay, and also to like and support, right, and to subscribe to the channel, so that you just get all the updates which I am actually for the videos that I'm posting currently, okay. Next is your InstaFX. So InstaFX was launched by ICICI Bank, and it is to help the customers कि जो आपके ICICI बैंक फॉरेस्ट प्रीपेड कार्ड है उनको स्विफ्टली वो चीज़ मिल जाए. और रुपे POS जो है दैट इज़ रन लॉन्च्ड बाय रुपे एंड RBL बैंक, एंड इट इज़ टू ट्रांसफॉर्म स्मार्टफोन्स, ठीक है, इनटू पेमेंट एक्सेप्टिंग टर्मिनल. तो यहाँ पे पे नियर बाय ऐप has to be updated by the user. Then is Unicas, where United Kingdom in partnership with United Multi-State Credit Cooperative Society in इंडिया. तो ये क्रिप्टो करेंसी और बाकी सब की ट्रांजैक्शंस, फाइट और क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस को एड करता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ये ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं. देन इज़ इन्फिनिट इंडिया बाय ICICI बैंक. इट इज़ फॉर कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल टच पॉइंट्स, ताकि हासिल फ्री बिजनेस हो सके फॉरेन कंपनीज़ के साथ. किन कंपनीज़ के साथ? फॉरेन कंपनीज़ के साथ. उसके बाद में आता है पायनीर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड, दैट इज़ इंडसइंड बैंक पावर्ड पार्टनर्ड बाय मास्टर कार्ड. तो ये बेसिकली इंडियंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है. बेसिकली स्पेसिफिकली कौन से इंडियंस जो ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है. डाक पे इज़ योर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स IPPB. तो ये बेसिकली डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करता है. उसके बाद में एस मनी माइक्रो ATM सर्विस जो है ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड इट इज़ बेसिकली टू प्लेस द ऑर्डर फॉर कैश विड्रॉल, ठीक है, बाय एस मनी माइक्रो ATM सर्विस. एंड दिस बेसिकली फॉर दिस टू अवेल customer has to use Ace Money app. Next is iMobile Pay by ICICI Bank, and it is to offer payments and banking services to your customers for any bank. ठीक है, किसी भी बैंक के अंदर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं. Next is your Axis Bank Rupify Business Credit Card. So it is basically Axis Bank in partnership with Rupify and Visa. So it is to explore its opportunity to expand the business in MSMEs. MSMEs are your micro, medium, small enterprises. So these are basically businesses that are run by people. So it is just to make them explore more and more in the business world. So it is just an initiative by your Axis Bank with having partnership with Rupify and Visa. Next is your asset restructuring web module. It is by SIDBI and SRC, or you can say SARC. So it is to just get benefits of RBI's MSME restructuring guidelines. So बस यही है कि जो RBI की MSME restructuring guideline है उन्हीं के benefits देते हैं. SMS पे फंक्शन की बात करूँ तो ये येस बैंक एंड वर्ल्ड लाइन देता है. तो ये बेसिकली कॉन्टैक्टलेस और रिमोट पेमेंट ट्रांजेक्शन सिक्योर्ड सेफ मैनर में करने के लिए है. उसके बाद में मुथूट गोल्ड शीट सुन के आपको गोल्ड ज्वेलरी का इंश्योरेंस मिलता है बाय मुथूट फाइनेंस एंड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस. नेक्स्ट इज ICICI बैंक कार्डलेस EMI. तो इसके अंदर ICICI बैंक एंड पाइन लैब्स जो हैं वो इन्होंने लॉन्च किया था और ये फर्स्ट बैंक बने थे डिजिटल पेमेंट्स के लिए कार्डलेस EMI फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिटेल स्टोर्स पर. नेक्स्ट इज़ योर येस बैंक न्यूक्रेड कार्ड. तो ये येस बैंक और न्यूक्रेड टेक्नोलॉजीज़ ने किया था ताकि कैशलेस पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हो सकें. कासा मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है दैट इज़ बाय कर्नाटका बैंक, ताकि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड हो सके टू द अनबैंक्ड सेक्शन. जो अनबैंक्ड सेक्शन है कंट्री का वहाँ पर भी बैंकिंग सर्विसेज अवेल हो सके. नेक्स्ट इज मुंह बंद रखो कैंपेन. सो इट इज़ बाय HDFC बैंक एंड इट इज़ टू प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन फ्रॉम cyber fraud. Since you people must be knowing that there are a lot of cyber frauds that happen every second, so one must be very aware of it. So HDFC has taken a step to make people aware of it. EVA unique saving account for women. So it is just for women empowerment. So Equita Small Finance Bank, it is launched by Equita Small Finance Bank, offers free health checkup and unlimited consultation with women doctors who are gynecologists and mental health experts. Okay. So it is just to empower women. Next is Cancer Sense No Notification campaign. Obviously you must be knowing that there are some people who gets to know that they're suffering from cancer in the third stage, the last stage. So basically Cancer Sense actually no notification, and one must actually get their checkup
as soon as they get to know about it. So it is just launched by Bharti AXA General Insurance Company, and National Cancer Awareness Day is observed on 7th November. So it is just a campaign. Okay. Next is your Smart Drive private car insurance. So Smart Drive private car insurance is basically run by your Airtel Payments Bank and Bharti AXA General Insurance. So this insurance policy offers compensation for the injury or damages caused to the another person और द प्रॉपर्टी ड्यू टू कार एक्सीडेंट की वजह से जो इंजरी या डैमेजेस होते हैं किसी दूसरे पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पर ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कि कंपनसेट कर देती है. उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक माइंड जो है ये आईसीआईसीआई बैंक को चलाता है. ये बैंक जो है इस प्रोडक्ट को चलाता है, एंड इट इज़ जस्ट टू प्रोवाइड अ सिंपल सिक्योर्ड कस्टमाइज बैंकिंग सोल्यूशन, ताकि जो मिलेनियल कस्टमर्स हैं आईसीआई बैंक के, तो उनको ये चीज़ें मतलब समझ आ जाए इजीली. वीज़ा डायरेक्ट जो है बेसिकली ये चलाता है आरबीएल बैंक और वीज़ा. तो ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए है, रिफंड्स, कार्ड बिल पेमेंट, कैशबैक, डिसबर्समेंट्स थ्रू वीज़ा डायरेक्ट. ठीक है. उसके बाद में दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्ड, यू पीपल मस्ट हैव बीन हैविंग दोस passes that you get for around, there is a time limit on it कि 50 दिन के लिए आप मेट्रो यूज़ कर सकते हो विद दिस कार्ड. पहले आप पेमेंट कर देते हो उस चीज़ के लिए. तो एस बी आई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, एस बी आई कार्ड्स में देखिए आप, टू सपोर्ट डिजिटल फाइनेंस मूवमेंट एंड टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन इन दिल्ली मेट्रो. तो दिल्ली मेट्रो में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है. नेक्स्ट इज़ योर इन्वेस्ट 4G. इसके अंदर क्या होता है, कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस ने ये चीज़ें लॉन्च करी है, एंड इट इज़ जस्ट टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फैमिलीज ड्यूरिंग द कस्टमर्स डिमाइज. अगर कोई कस्टमर जो है गॉड फॉरबिड इफ़ ही डाइज, अगर वो मर जाता है, तो उसकी जो फैमिली होती है उसको कुछ फैमिली सिक्योरिटी दी जाती है. नेक्स्ट इज़ योर हेल्दी लाइफ प्रोग्राम. तो हेल्दी लाइफ प्रोग्राम जो होता है दैट इज़ बाय HDFC बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल्स. तो ये होता है कि आपकी हेल्दी लाइफ इजीली एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो टू दी HDFC बैंक के कस्टमर्स. ठीक है. तो ये उन्होंने बॉन्ड कर रखा है, एक तरह से पार्टनरशिप कर रखी है. नेक्स्ट इज़ योर सैलरी कार्ड. तो सैलरी कार्ड में कुछ नहीं है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय योर अर्ली सैलरी एंड NPCI, दैट इज़ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये इमीडिएट एक्सेस प्रोवाइड करता है सैलरीड प्रोफेशनल्स को, और जो कि इंस्टेंट परचेजेस कर सकते हैं अक्रॉस मर्चेंट्स इन इंडिया. उसके बाद में एक्सिस ACF क्रेडिट कार्ड. तो इसमें कुछ नहीं होता है, एक्सिस बैंक जो है वो गूगल पे और वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करता है ताकि यूज़र पार्टिसिपेशन डिजिटल वर्ल्ड में इंक्रीज कर सकें. सो फॉर टुडे दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड. So it is basically by your Axis Bank in partnership with Vistara, and it is to allow the customers to travel the destinations abroad in cashless and hassle-free manner. So next we will be taking up in part 3, and we will be completing this all. Thank you so much.